Hello students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. So student, today we will start a new chapter, that is chapter of history, Ashoka, the emperor who gave up war. And in this chapter students, we will discuss about some points like empire and dynasty, and then rise of Maurya empire, Ashoka the great, then war of Kalinga and Ashoka's inscription. And after then we will discuss about that Ashoka's Dhamma and his messages for the future generation of Indian civilization. And in the end of the chapter, we will discuss in elsewhere that the Great Wall of China. So let's begin. Students, before start this chapter, we will study about how are empires different from kingdoms. कि जो साम्राज्य है, empires है, वो different क्यों है kingdom से, राज्य से. सो स्टूडेंट्स, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज. जो एम्परर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है रिसोर्सेज की, उन्हें ज़्यादा नीड होती है रिसोर्सेज की देन कंपैरेटिवली किंग से. वाई? बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज. एंड स्टूडेंट, दे ऑल्सो नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स who collect taxes for them. So students, first of all, we will discuss about dynasty. So what do you mean by dynasty? Yes, it means vansh. When members of the same family become rulers one after another, जब family के member rule करते हैं एक के बाद एक, then the family is called a dynasty. Okay, and student, the Maurya dynasty was with three important rulers. And before start it, I will give you a overview of Maurya dynasty. Okay, so first of all, who was the founder of this Maurya empire? You know? Yes, he was Chandragupta Maurya. He was the founder of the Maurya empire. And after then, who came? That his son Bindusara, and then Bindusara's son Ashoka. So students, Chandragupta Maurya, he was the founder, and he was the founder of the Maurya empire, as you know. And student, Chandragupta Maurya found one teacher that named Chanakya. He taught him everything and helped in to win Indian civilization's northwest area. और उन्होंने हेल्प की थी विन करने के लिए जो इंडियन सिविलाइजेशन का नॉर्थ वेस्ट एरिया था. आफ्टर देन ही अटैक्ड ऑन मगध किंगडम. उसके बाद उन्होंने अटैक किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, कहाँ पर? मगध किंगडम पे. एंड ही क्रिएटेड बिग एम्पायर, और उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया. एंड आफ्टर चंद्रगुप्ता, हिज सन बिंदुसारा, ही रूल्ड एंड ही ऑल्सो वॉन साउथ एरिया. और उन्होंने किसको जीता? साउथ एरिया को. एंड रूल्ड ओवर देयर, और वहाँ पे रूल किया. एंड देन स्टूडेंट, आफ्टर बिंदुसारा, दैट बिंदुसारा सन केम, वो आए एंड ही रूल्ड, एंड हिज नेम वॉज दैट अशोका. ही रूल्ड ऑन दैट एम्पायर, और उन्होंने उस एम्पायर पर रूल किया. नाउ स्टूडेंट्स, we are going to discuss about a very big kingdom and empire. And students, as you know that the loins that we see on our notes as well as coins have a big long history. एक बहुत लंबी हिस्ट्री है उसकी भी. and they are called a loin capital, जिसे कि loin capital भी बोलते हैं. is it? And student, that is carved in stone and placed on the top of a massive stone pillar at Sarnath. जो कि कहाँ पे प्लेस है? एट द टॉप ऑफ द मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ. तो सारनाथ कौन सी जगह है? यस, दैट इज़ द प्लेस वेयर बुद्धा हैज़ गिवन हिज टीचिंग्स, जहाँ पे बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स दी थी. एंड स्टूडेंट्स, दैट Ashoka was one of the greatest rulers, as you know, of history. And on his instructions, जो उनकी instructions थी वो कहाँ पर थी? That inscriptions were carved on the pillars as well as on rock surfaces. जो खुदाई की गई थी पत्थर के ऊपर, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी. एंड स्टूडेंट, जो ये तीन लॉयंस हैं, ये फ़ोटो कहाँ से ली गई हैं? ये मूर्ति से ली गई थी. ये मूर्ति लगाई गई थी सारनाथ में. ओके. एंड स्टूडेंट, ये जो मूर्ति लगाई गई थी, दैट वाज द एम्बलम ऑफ अशोकास एम्पायर. जो कि एम्बलम था, मीन्स जो ध्वज था, निशानी थी अशोका एम्पायर की.
Now students move on another slide that is about the Mauryan Empire. And students, the empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya. Okay, more than 2300 years ago. Got it? And student, that Chandragupta Maurya, he was supported by a wise man. You know na, the name of that person, that was Chanakya or Kautilya. And students, many of Chanakya's ideas were written down in a book. कौन सी बुक में लिखा गया था? And that book called Arthashastra. And students, there were several cities in the empire. कुछ एक cities थी इस empire में, and these included the capital पाटलिपुत्र जो कि पटना है, and Takshila that is in now North Pakistan, and Ujjain that is in Madhya Pradesh. And student, that Takshila was the gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to साउथ इंडिया. अगर उन्हें इंडिया सिविलाइजेशन के नॉर्थ वेस्ट एरिया में इंक्लूडेड दैट सेंट्रल एरिया में जाना होता, तब उन्हें तक्षशिला से होकर जाना पड़ता था. ओके. एंड स्टूडेंट, यू नो, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड जो क्राफ्ट पर्सन थे, दे प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज़. जो मर्चेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे, वो जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो इन्हीं सिटीज़ में रहते थे. एंड इन अदर एरियाज जो अलग और एरियाज थे, एंड देयर वर विलेजेस और फार्मर्स एंड हर्डर्स. ओके. एंड स्टूडेंट, इन सेंट्रल इंडिया लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दैट वर फॉरेस्ट्स where people gathered forest produce and hunting animals. Now students, move on another slide that is about the ruling the empire. As the empire was so large, as you know, the empire was so large and different parts were ruled differently. And students, the area around पाटलिपुत्र, जो अराउंड एरिया था पाटलिपुत्र का, that was under the direct control of एम्परर. और इसके अलावा जितने भी एरियाज थे जिसे प्रोविंसेस कहा जाता था, जहाँ गवर्नर्स को भेजा जाता था और रूल करने के लिए और टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, वो जाते थे वहाँ, रूल करते थे और टैक्सेस कलेक्ट करते थे. एंड स्टूडेंट, ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स एट्सेट्रा. एंड also these officials also punished those who disobeyed the rules of orders. जो कि इन रूलर्स के ऑर्डर्स को डिसओबे करते थे, तो ऑफिशियल उनको पनिश भी करते थे. एंड दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज. और जो ऑफिशियल्स थे उन्हें एक परमानेंट सैलरी दी जाती थी फॉर देयर वर्क. एंड स्टूडेंट्स, दैट मैसेंजर्स वेंट to and fro and speaks kept watch on the official. जो एम्परर्स होते थे वे अपने मैसेंजर्स मीन्स खबरी भेजते थे इधर उधर, और वो जासूसी करते थे. एंड दे वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, एंड द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ रॉयल फैमिली एज वेल एज द सीनियर मिनिस्टर्स. एंड student, there were other areas, or you can say provinces. Okay, each of these area that was ruled from a provincial capital such as Takshila और उज्जैन. जो एरिया एम्परर कंट्रोल नहीं करते थे उन एरियाज को कहा जाता था प्रोविंसेस. एंड ईच ऑफ दीज एरिया, दीज वर रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल. ओके. और इन्हें रूल किया जाता था प्रोविंशियल कैपिटल से, जिस जगह पर एम्परर अपनी आर्मी और ऑफिसर्स रखता था, और उस जगह से उस एरिया को कवर किया जाता था. एंड स्टूडेंट्स, रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स. लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड. अगर जब किसी भी एम्पायर पर किसी भी एरिया को जीता जाता था तो रॉयल प्रिंसेस को भेजा जाता था गवर्न करने के लिए. एंड जब किसी भी एम्पायर में अगर किसी भी स्टेट पर रूल किया जाता था तो उस स्टेट के जो लोकल कस्टम्स थे एंड जो रूल्स थे उसी को फॉलो किया जाता था.
And students, Maurya tried to control roads and rivers which were important for transport. और जो मौर्यस थे वो ट्राई करते थे कंट्रोल करने का उन रोड्स को, उन रिवर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड tribute that means gift. Okay, for example, Arthashastra states that the northwest was important for blanket as well as the south India for its gold and precious stones. जो अर्थशास्त्र में लिखा गया है that जो नॉर्थ वेस्ट था वो बहुत important था for blankets, and the south India that was very important for the gold and precious stones. And student, there were also forested regions, is it, and that is central area, and people living here were more or less independent. जो लोग यहाँ रहते थे फॉरेस्टेड रीजन्स में जो कि सेंटर एरिया में था, दैट वहाँ के जो लोग थे वो लेस इंडिपेंडेंट थे, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू द मौर्य ऑफिशियल्स. वो गिफ्ट करते थे, ट्रिब्यूट करते थे मौर्य एम्पायर को, and it is possible that their resources were collected as tribute. Okay, you know what do you mean by the tribute? That was the collected when it was possible to get from people who gave a variety of things more or less willingly. Now students, move on another slide, that is the emperor and the capital city Patliputra. एंड स्टूडेंट दैट मैगस्थन्स ही वॉज द एम्बेसडर, वो कि एक राजपूत था, सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता, जिसे कि भेजा जाता है चंद्रगुप्ता के दरबार में बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया एंड दैट नेम्ड सेल्यूकस निकेटर, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर. एंड स्टूडेंट दैट मैगस्थन्स रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ, और उन्होंने वो सब लिखा जो उन्होंने देखा था अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य इन अ बुक दैट इज इंडिका. इंडिका में ही हैज़ रिटन ऑल अबाउट द चंद्रगुप्ता, एंड ही रॉट दैट द एम्परर इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलिक्विन. गोल्डन पैलिक्विन दैट इज पैलिक्विन मीन्स दैट इज पालकी, एंड हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर. And you know students that he also has written that the king is afraid that someone may try to kill him, and he is always surrounded by armed guards, as well as he has special servants to taste the food before he eats, and he never sleeps in the same bedroom for 2 nights. And not only for the king he has written, he also has written regarding the capital city. He wrote that the Patliputra is large and beautiful city. It is surrounded by massive wall, and it has 570 towers and 64 gates, and the houses of 2 to 3 stories are made of wood and mud bricks, and the king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. So students, till here we have discussed about empire and dynasty, overview of Maurya dynasty as well, and Maurya empire system and rules, and Maurya empire's life, and about Patliputra. And now students, we are going to study about Ashoka, a unique ruler. And students, as you know, the most famous Maurya ruler was Ashoka, and he was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions, जिन्होंने अपने जो मैसेज है उसको कन्वे किया लोगों को थ्रू inscriptions, and most of them were in प्राकृत. प्राकृत क्या थी? एक लैंग्वेज थी उस टाइम की, एंड वर रिटन इन ब्राह्मी, जो कि ब्राह्मी में स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, जिसे कि लिखने का तरीका होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्क्रिप्ट, दैट इज़ ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी. एंड देन स्टूडेंट, अशोका एम्बलम, जो अशोका का जो एम्बलम था दैट इज़ नाउ आर नेशनल एम्बलम. Now students, next one, that is Ashoka's war in Kalinga. And students, Kalinga is an ancient name of coastal Odisha, and Ashoka fought a war to conquer
Kalinga. And after this war, he was so much horrified. And when he saw the violence and bloodshed, that he decided not to fight any more wars. और उन्होंने तब डिसाइड किया था कि अब उसके बाद वो कोई भी फाइट या वॉर नहीं करेंगे. And he is the only king and in the history of the world who gave up conquest after winning a war. Now here students we will discuss about the Ashoka's inscriptions describing the Kalinga war, and Ashoka is one of his inscriptions wrote that 8 years after becoming king. Okay, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured, जो कि बंदी बना दिए गए थे 1.5 lakh people, and more than 1 lakh people were killed. And whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoners. And जब भी किसी इंडिपेंडेंट देश को कैप्चर किया जाता है तब क्या होता है स्टूडेंट्स, तब lakhs of the people they die and many are taken prisoners. And student, he also has written that Brahmins and monks and good peoples also die or lose their loved ones. And this is why I am sad and have decided to observe Dhamma. और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑब्जर्व करूँगा धामा को and to teach others about it. And student, he has also written that I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. कि धर्म से आप लोगों का दिल जीत लो ये ज़्यादा बेटर है कि आप ताकत से उन्हें जीतो. Okay, and also he has written that I am inscribing this message for the future so that my sons, my grandsons after me should not think about war. And instead they should try to think about how to spread Dhamma. And student, in this module we will study about what was Ashoka's Dhamma. And Ashoka's Dhamma did not involve worship of God, किसी भी भगवान की पूजा करना और performance of sacrifice, कोई भी sacrifice करना या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना, is it? And he was also inspired by teachings of the Buddha. And student, there were a number of the problems that troubled him. People followed different religions. उस टाइम जो लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस को फॉलो करते थे एंड दिस टाइम्स समटाइम्स लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, slaves and servants were ill treated. After that, Ashoka felt that it was his duty to solve these problems. So he appointed officials known as Dhamma Mahamatas. So इसके लिए उसने अपॉइंट किए कुछ officials that known as Dhamma Mahamatas and who went from place to place teaching people about Dhamma. And Ashoka that get his message inscribed on rocks as well as on pillars. And then students, Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhammas to other lands such as Egypt, Syria, Greece and Sri Lanka. And also he built roads, dug wells and built rest houses. And he arranged for medical treatment for both humans as well as for animals. And now students, in this module we are going to discuss about the Ashokas, the messages to his subjects. And people perform variety of rituals when they fall ill, when their children get married, as well as when children are born, etc. And these rituals are not useful. जो ये rituals थे वो useful नहीं हैं. If instead people observe other practices, this would be much fruitful. And what are these practices? ये practices कौन सी हैं? Like being gentle with slaves and servants, respecting one's elders, and treating all creatures, चाहे वो humans हैं चाहे वो animals हैं, with compassion. With compassion means दया से उसके साथ ट्रीट किया जाए. And giving gifts to Brahmins and monks.
and also it is both wrong to praise one's own religion or criticize another's religion. ये दोनों ही गलत है कि सिर्फ अपने रिलीजन को आप प्रेज करते हो और दूसरे रिलीजन को आप क्रिटिसाइज करते हो. And therefore one should try to understand the main ideas of another religions and respect it. And student, this slide that is about the elsewhere. Around 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall, and it was meant to protect the northern frontiers, that is boundaries of the empire, from postal nomadic people. And that this wall is about 6,400 kilometer long and is made of stone and bricks with the road along the top, and several thousand people worked to build the wall. And there were watchtowers along and all along at distances of about 100 to 200 kilometers. I hope students you understood whatever we have discussed in this chapter, all the basic point we have discussed. And student, again I'm telling you, you have to just read the chapter and underline all the main points, important points. Okay, and then student, complete your work properly and go through this video as well. So student, take care. Goodbye.